Please start, sir. Okay. Hello, my dear learner. You're welcome. And today we are discussing the MSCCFT 04004 Module 2. And Module 2 is about practical aspects of counseling and family therapy. So, yesterday we discussed many things about the essential characteristics, need, parameter, component of a counseling. And today we are discussing this counseling and family therapy in respect to practical aspects of counseling and family therapy number one. Right. So you people are just entirely, primarily, mainly focusing on counseling and family therapy. The nutshell I'm telling you, you are mastering yourself about counseling and specialized in your family therapy. Right. So practical aspects of counseling and family therapy. You must know what are the practical comfort, what are the practical difficulties, and what are the practical steps you are focusing, you are facing, you are dealing, and you are handling with the client or as a professional. Right. So practical aspect, if we explain in terms of Gurman and Knishken, Gurman, Gurman, and Krishkern, Knis, Kniskern, 1981, counseling and family therapy emerged from the early systematic notion of relationship in terms of marital and family functioning and therapeutic approach. That means counseling and family therapy emerged from the early systematic notions of relationship to range of comprehensive marital and family functioning. Marital and family functioning. It does not mean the people. I'm referring to two words there: marital and family functioning. Marital, that means matrimonial related issues, and family functioning, family related issues. So the counseling and family therapy may be. That means the counseling and family therapy may be needed for the perspective parameters of marital parameters or of family parameters. Marital or family, these are two things I am discussing with you. And being marital and family both are separate, I mean. You people knowing it better, how the people are separate and how the people are not related to each other. So, counseling and family therapy. So, what are the practical aspects? So, practical aspects, if we discuss, it may be related to your gender, it may be related to your age, right? And it may be related to your caste, creed, religion, ethnicity, right? Multicultural culture, your age, right? Your disability, your values, your experiences, right? Your motivation level, your body language, your facial expression. Many things are to be held responsible for the practical aspects of your counseling and family therapy, right? Counseling and family therapy practical aspects. If we understand the history of the field, that is a counseling family therapy, we understand the eras of epistemology through which it has evolved. That means the conceptual model focus on direct focuses on the direct work of marital issues and the family issues. Right. So if we go back to our past history, just you see the difference between marital setup and the family setup. Just you go back 15, 20 years back, not so much back, and you see the concepts, the functioning of the family and the marital issues. You go back in 20 years, the marital issues were totally different
The girls and boys are to be married, but they totally remain unknown before their marital alliances. Now, in present time, marital issues, marital parameters change. Before marriage, the boys and girls they know well each other, right? So the many changes has been taken place in terms of a marital or in terms of your family setup. You go back in 20 years back, for example, 25 years back, family issues, father, mother, everything they are to master, they are to decide everything. Now, children are becoming the masters of the family. They intervene, they support, they help in the decision making of the families. राइट, पहले दादी माँ का कंसेप्ट होता था, दादी माँ चाबी टांग के रखती थी अपनी, किसी को चाबी नहीं थी, मीन्स दैट वाज शोइंग द होल्ड ऑफ द कंप्लीट फैमिली, राइट? सो नाउ इन द फैमिली सिस्टम everyone is contributing a equal role irrespective of the father, mother or children. Either they are contributing positively or negatively, whatever. So totally evolutionized changes have been taken place in terms of your marital or in terms of your family setup, right? So due to the changing scenario of your socio-cultural background, the built-up environment of your family, the built-up environment of your marital parameters is totally in new era of life, right? So if we discuss in terms of marital and family issues, what are the impact of counseling and family therapy? What impacts? If you need, if you extend, if you provide counseling and family therapy, how it influences, how it works, right? So practical issue, that means how the family and counseling therapy is operational, is functional, how it works, right? It can be worked in relation to, in particular relations to the client and the therapeutic analysis, or the client and therapist, both they are to do something there. It does not mean the client is completely passive and the therapist is to be active. Both they are to contribute actively. Both they are to be active during the counseling process, right? It does not mean one side is active, another side is passive. Either side, either counseling or the counselor or the other client, both are to be actively participate in the process of counseling. Only then it can be remain functional. Only then it can works. If either one is silent, it will not be functional. It will not work there. So particularly the counseling and family therapy is to taken place, is to organized, arranged or managed for healing purpose, because client is having some expectation. Similarly, the therapist is having some expectation. Both client is also getting help and the therapist is also getting help. Therapist helping client and client helping therapist, right? Therapist is having intentions to get rid of the problem. The client is having an intention to earn the money, for example, to enhance his professional skills, right? To enhance his name and fame in society, in professional society, right? So both they are to work for the healing and helping each others. The next, only then the counseling family therapy will remain operational, functional, or it can work there. So then in terms of relationship, the confidentiality, as we yesterday discussed, is one of the most desired, top most desired level of significant interaction, significant results, right? The confidentiality is always remain the top. If we are confidential, right? Neither the client is to be disclosed anything personal level or the therapist not to be discussed. You know why we are the confidential? Particularly in Indian setup, there is a wide gap of gender differences. If you take the example of male and female, if counselor is male and the client is female, or opposite, for example, so there may be little hesitations on the basis of the gender barriers, right? If you go little bit, if you cross little bit your line of
demarcation between you and your client, that can create a problem. That can create a misunderstanding. Either side, right? So particularly you must be very fixed, you must be very definite about the fixation of line between you and your client, right? Only then the confidentiality is to be help you to their only retain. So how it can be effective? That means how the posture will be there, how the client is to be seated there, how the therapist is to be seated while they are to sit for the session. You see, when you start for the session, there is a different posture of sitting. When you're not in the session, just you are interacting off the session. So there may be a different postural sitting position. Right? When you are in a formal session of your counseling, there are certain posture are to be needed there to reflect from your side and from the client side both. Right? So the postural reflection in what posture you are supposed to sit there is most important, and obviously the hopefulness or hopelessness. The client must be hopeful from your side, right? And particularly because why he or she is the hopeful, the client is hopeful to get rid of the problem, so new opportunities, new options, new arena will be open for the client to be the normal one, right? Automatically, it enhances the self-efficacy, as I yesterday discussed about the Rogers concept of self, right? Self-efficacy, self-esteem, self-motivations, right? Self-regard, and unconditional positive regard. Many things I discussed yesterday. So automatically, it enhances the self-efficacy of the client, right? And if the therapist and the client understand each other's in terms of care, the therapist is a caregiver and the client is a care receiver, right? So if they understand the meaning value of the care, then definitely the therapy or a counseling will remain operational, functional, and valid and recognized, and it can work only if they understand this one properly. The biggest thing we have many problems we face in India to retain eye contact. I told you the gender barrier, right? You are to retain the eye contact, but how to retain the eye contact is if there is an opposite gender is there. Eye contact is definitely you're not supposed to gaze, घूर के नहीं देखना आपने, and you are supposed to realize the client. Yes, I am focusing you, and I am retaining my eye contact. I refer my example, and this is a very self-experienced my example I'm sharing with you. I was in Canada, for example, and I was little shy. I don't contact with eye contact with the opposite gender, for example. I was little shy. Then there was counselors were there who were about the employment counselor, career counselor. I went there, right? And she told me, why you not retaining the eye contact? I'm sorry, I cannot. Then she told me, I know, being Indian, you people are a little shy. So then she told me one remedy how to come across this problem. She told me, when you have an opposite gender and you are supposed to retain your eye contact, just you focus on the forehead only, not to the eye, right? Then I start to practice that one, and now I'm feeling very comfortable while interacting because I'm focusing on the forehead, not on the eyes. When you're focusing on forehead, the client automatically receiving that I am retaining the eye contact. There is just a minor difference of eye and forehead is there, but I'm getting confidence when I'm focusing on my forehead of the client. So there's a lot of being cultural orientation, cultural differences, many things are there in barriers of the genders, for example. So and you must be very relaxed position में होना चाहिए आप जब आप काउंसलिंग देते हैं. ये नहीं कि आपने बिल्कुल टेंस होके बैठना है, because you are to relax the client. Until you yourself as a therapist or counselor is not relaxed, you cannot help the client to be feel relaxed. Am I right? So whenever you are getting ready for the session,
session in counseling. So automatically, this is a practical issue I'm telling you. Practical tips I'm telling you. You must be relaxful or totally relaxed. If you are expressing yourself, projecting yourself as a relaxed one, so automatically client is to be motivated to seek certain learning from you, certain modeling, certain observations कि कितना आराम से बैठ के मुझे कॉन्फिडेंटली काउंसलिंग कर रहा है या कर रही है, राइट? सो ही और शी विल ऑटोमेटिकली मोटिवेट टू फॉलो यू. यू नो, काउंसलर और क्लाइंट के अंदर जो रिलेशन होता है, टीचर और स्टूडेंट्स वाला रिलेशन होता है वहां पे, राइट? काउंसलर इज प्लेइंग ए रोल मॉडल देयर, ही इज ए मॉडल टू द क्लाइंट. अगर वो असली एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और अपने एथिकल लेवल को रिटेन करता है, सो द काउंसलर थेरेपिस्ट इज द रोल मॉडल ऑफ द क्लाइंट, एंड डेफिनेटली एवरी क्लाइंट इमिटेट observe the therapist and the counselor definitely. So you become the role model. You are to retain eye contact. This is a practical issue. You are to show your totally relaxed level there, and then you are to sit squarely. स्क्वायर बना के बैठ, आपने स्क्वायरली पोजीशन होनी चाहिए आपकी. ये नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा एकदम से आपकी जो झुकाव होगा क्लाइंट की तरफ वो भी इतना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल उसके ऊपर गिरने को, और इतना दूर से भी नहीं होना चाहिए कि आप उसे बहुत दूर हट के बात कर रहे हो. आपने एक स्क्वायर पोजीशन बनाना वहां पे आपने, राइट? ओनली देन यू कैन रिटेन द कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट प्रॉपरली एंड यू आर लिविंग सम इंप्रेशन ऑन द क्लाइंट. एंड देन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी भुजाओं को बिल्कुल बंद करके, जो आपके हाथों को बिल्कुल बंद करके और टांगों को बिल्कुल बंद करके ऐसे बैठे जैसे आपको सजा देने के लिए बिठा रखे. आपने प्रॉपर एक पोस्चर बनाना बैठने का, जिसमें यह भी ना लगे कि बिल्कुल जैसे स्कूल का बच्चा टीचर के सामने बैठता ना हाथ बंद करके, ऐसे नहीं बैठना आपने. बिल्कुल एक पोस्चर बनाना आपने कि जिसके एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे होता है क्लाइंट के लिए, वो पोस्चर आपने देना है, राइट? एंड देन ऑटोमेटिकली आपने लीनिंग, झुकाव जो होता है क्लाइंट की तरफ, थोड़ा सा क्लाइंट की तरफ झुकाव करेंगे, थोड़ा सा, वो भी बैलेंस बना के, नहीं कि बिल्कुल ऊपर गिर जाएंगे उसके. थोड़ा सा लीनिंग पोजीशन ऑफ यू एज ए थेरेपिस्ट शुड बी एप्रोप्रिएट देयर. क्लाइंट को ये भी नहीं लगे कि बिल्कुल मेरे ऊपर ही चढ़े आ रहा है, क्लाइंट को ये भी नहीं लगे कि बिल्कुल मेरे से दूर हो जा रहा है. सो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और सेंसिटिव इश्यूज हैं. आई एम यूजिंग द वर्ड सेंसिटिव because every issue is a meaningful for you and your client, which can be the base of your therapeutic sessions and the treatment alliance and the treatment agreement between you and your client. अगर ये सब प्रॉपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर और क्लाइंट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा फॉर द स्मूथ काउंसलिंग सेशंस, राइट? अब आई एम सिटिंग लिटिल अहेड. अगर आपने सब कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज रिटेन कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी में एज फैक्टर, राइट? इफ द एज ऑफ द क्लाइंट इज ए पर्टिकुलर लेवल पे को एज होता है. एडोलेसेंट है तो उसकी अलग प्रॉब्लम मिलेगी, चिल्ड्रन है तो उसकी अलग प्रॉब्लम मिलेगी, राइट? बहुत नटोरियस है, स्कूल काम नहीं करता, सारा दिन परेशान होकर देता है, ये कर देता है. एडोलेसेंट से घर में नहीं टिकता, सारा दिन बाहर घूमता रहता है, इसके फ्रेंड सर्कल बहुत है, राइट? अगर उससे जाके अडल्ट बन गया तो कुछ काम नहीं करता है, रोटी खाने को कौन देगा इसको? मिस एवरी एज इज हैविंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम. एज के हिसाब से हमारी प्रॉब्लम चेंज होती जाती है सोशल सेटअप में, राइट? और जब अडल्ट होता है तो हस्बैंड वाइफ का इशू बनता है, ये बनता है कि हर जब वाइफ के पीछे पड़ा रहता है, वाइफ की मानता, पेरेंट्स की नहीं मानता, पेरेंट्स की मानता, वाइफ कहती मेरी नहीं मानता. सो देयर बच्चे हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान नहीं देता. ये मिस many issues are there in your marital and the family setup, and every issue, every parameter is age specific, right? For example, एक एज स्पेसिफिक होती है, हमारे पास एक एज होती है कि बच्चा बचपन में दूध कम पीता है, बच्चा बचपन में खाता पीता कम है, और उसकी हेल्थ पेरेंट परेशान हो जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं कि कुछ भी नहीं खाता है, हम इसको बहुत कुछ करते हैं, इसकी हेल्थ देखो, ये देखो, राइट? दैट इज एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम. जब बड़ा हो जाता है फिर उसको रोकते हैं, तूने शराब पीनी शुरू कर दी, तू बाहर का ज्यादा खाने लग गया, तेरे को शर्म नहीं आती, तू ज्यादा फैटी सामान खाता है, ये करता. बीस एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हर दुनिया में, हर फैमिली में आएगी.
सो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपने रिटेन करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू एज you are to find the practical issues there according to age. एल्डरली है उसके अलग इशू मिलेंगे, हर एज के अलग अलग इश्यूज होंगे. सो अकॉर्डिंगली यू आर टू हैंडल दिस केस और योर क्लाइंट प्रॉपरली. और जेंडर का मैंने बताई दिया आपको, जेंडर के लॉ में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको. उसके बेस पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे गरीब है अमीर है, राइट. अमीर की वे ऑफ ड्रेसिंग कैसे होगी, वे ऑफ पोस्चर कैसे होगा, राइट. वे ऑफ प्रोजेक्शन कैसे होगा, हाउ दे प्रोजेक्ट देमसेल्फ. Many people are there who are rich of family, they have lot of disputes within the family, and when they go to counselor and they show their I am so and so well off family, and they project that I am something, right. If you under the impression of the client that he or she is belong to particular that high class family, you cannot justify your counseling there, because mentally you are under pressure being high setup of the client. Clear. And then if the client is opposite to the low setup, right, you will be under pressure that I don't know whether comfortable in paying my fees, whether comfortable to continue or not. Many issues are there. You should never be under pressure. You there as a impartial counselor, irrespective of socio-economic status of the client, right. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सपोज को डिसेबल्ड क्लाइंट आ गया, एक बच्चे की बॉडी परसेप्शन को लेकर के, बॉडी इमेज को लेकर बहुत अपसेट है बच्चा. that boy or girl is not happy with the body image, right, and remain depressed, isolated, parents upset body image को लेके. How you enhance the body image of the client? Suppose my body appearance is not perfect, right, being ugly body image, bad body image, I don't have friends, and I'm feeling isolated. So this is very big problem. This is a disability, for example. Disability does not mean we are physically disabled. Whenever we are inferior in any area, we become disabled because we cannot compete to a particular section of society, to a particular group of society. You are disabled, we are disabled, right? So disability is the biggest problem in our professional area, right? And then रिलीजन. कई बार हम बात करते करते, सपोज हमें पता ही नहीं क्लाइंट का रिलीजन क्या, हम किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में कोई बात कर देते हैं, बात करते करते when session is going on, right, routine में unintentionally we can say something about it, some comment about a particular religion when we are giving counseling. So you must be aware, whenever you are making a case history of the client, you must specifically mention the religion of the client, so that there should not be any personal attack of any religion. If you unintentionally have spoken some comment on their particular religion, and the client may be feeling lot of hurt there, and withdraw the client automatically कि मेरे religion के बारे में नेगेटिव बनता है, right. उसके बाद हमारा particularly एक और ध्यान रखना, हमें sexual orientation को जरूर ध्यान रखना. Sexual orientation, suppose marital issues are there, so sexual orientation we are definitely to be considered there, right. So many issues are there about the sexual orientations. And then फीस के बारे में आपने ध्यान रखना है. प्रैक्टिकल इश्यूज है, पहले क्लियर कर लेना, इतना फीस लेना है मैंने, और इतने घंटे मैंने आपको एक दिन की काउंसलिंग सेशन, इतनी मिनट का काउंसलिंग सेशन देना. आप पहले बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं प्रैक्टिकल इशू, बाद में कोई, और वो आपने एक एग्रीमेंट के अंदर डालना है, राइट. वर्बली नहीं करना कुछ भी. ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, राइट. एंड देन व्हेन यू आर ready to provide the counseling, but you must go to the background, family background of the client. Client himself you are giving counseling as individual level, but you must know the family background of the client, definitely, right. And then you note down in your case history about the individual strength of the client, right, and motivation of the client, right. So then उसके बाद body language, cultural differences, many things you have to note down when you are listing your personal issues, focusing on your personal issues particularly. So when you are delivering your professional skills to the client, right, when you started the session,
So obviously you are doing through insight to action. Insight है, क्लाइंट को मोटिवेट करेंगे टू लुक इनसाइड, to look. Why you ask the client to look inside through your motivational lecture, through a motivational talk therapy, you ask the client to look inside. That is the insight. अपने आप के अंदर झांक के देखो. You have the strength, you have the power, you have the level of self efficacy to strengthen yourself, right? Your functionality, operational values will be recognized only when you proceed from insight to action. राइट, उसको बोलोगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, यू कैन एक्ट, यू कैन वर्क, राइट? एंड ऑब्वियसली reinforcement, rehearsal and imitation. Reinforcement, rehearsal and imitation is very important component. Practical issues, when our client is doing a significant change, reflecting significant change, accepting your advice, you must reinforce the client. It does not mean आप उसको फटाफट 20 रुपए निकाल के देंगे, 100 का नोट देंगे, लो जी आपने अच्छा काम, 100 रुपए ले लो. No, reinforcement. There are varieties of reinforcement, right? Varieties of reinforcement. You can appreciate that is a reinforcement. You recognized his contribution toward the successful implications of the counseling in many forms, right? Until or unless you cannot recognize, you cannot reinforce, you have to do lot of rehearsals there. बार बार repeat करेंगे की चीज को, right? And you, I told you as a model, because client is observing you, right? Then practical issue आपका एक बनेगा goal setting में. You have to set your, fix up your goal. क्लाइंट को बोल रहा है देखो मैंने, आप इस लेवल पे आए हैं और मैंने इस लेवल तक पहुंचना, दिस इज माय गोल टू रीच देयर, एंड दिस विल बी हाउ मेनी सेशन विल बी देयर, एंड हाउ मच आई, दिस मच आई विल चार्ज पर सेशन. Goal is to be set there in your terms and the client terms. Both are to be happy, satisfied with the setting of the goal, and the goal setting is to be done there with the consensual form. दोनों तैयार होंगे, दोनों एग्री होंगे, only then goal is to be sensitized there, right? So, and then you go for desensitization. Suppose a client is a hydrophobic, zoophobic, किसी पर्टिकुलर जानवर से डर लगता है, desensitize करना है. सपोज एक बच्चे को कुत्ते से डर लगता है, you have to desensitize. पेरेंट्स आ जाते हैं कि ये तो किसी तरह कुत्ता देखते डर के भाग जाता है, स्कूल नहीं जाता है, ये नहीं करता, रात को डरने लग जाता है. You have to desensitize. Desensitize करने के दो तरीके होते हैं. There are two steps to desensitize the client, right? कोई पर्टिकुलर सीन टीवी में देख के बच्चा डरता है, you have to desensitize. पानी देख के डरता है, you have to desensitize. इंजेक्शन देख के डरता है, you have to desensitize. Desensitize होने के दो तरीके हैं आपके पास. एक है आपका फ्लडिंग, FLOODING, फ्लडिंग, और एक आपका सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन. सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यहाँ पे ये होता है, पहले आप उसको कुत्ते की स्टोरी सुनाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे धीरे धीरे, फिर उसको थोड़ा दूर से कुत्ता दिखाएंगे. दैट सिस्टमेटिकली, स्टेप वाइज यू हैव टू desensitize the sensitivity level of the child or a person, right? And then finally आप कुत्ते को टच करके दिखाएंगे उसको, धीरे धीरे कुत्ते को अपनी गोदी में ले लेंगे आप, फिर धीरे धीरे उसको कहें बेटा पकड़ो इसको, हाथ रखो इसके ऊपर. दिस इज ए सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, राइट? कोई भी चीज का ले लो आप. एंड फ्लडिंग, इमीडिएटली आप कुत्ते को उठाओगे, बच्चे गोदी में रख दोगे. दैट इज ए फ्लडिंग, राइट? सो यू पीपल आर देयर टू desensitize, but this desensitization technique is depending on you after reading the client psychology, राइट? ऐसा ना हो फ्लडिंग किया और क्लाइंट आज के बाद मुड़ के नहीं है आपके पास, इतना डर जाएगा. आपने साइकोलॉजी जरूर स्टडी करना है क्लाइंट का विद द हेल्प ऑफ ए केस स्टडी प्रिपरेशन, राइट? मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन, एमएचसी जब आप करते हैं उसका केस स्टडी बनाते हैं, और केस स्टडी जरूर स्टडी करते हैं ताकि आपको साइकोलॉजिकल लेवल पता चल जाता है बच्चे का. सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन गोज वेरी स्मूथ, बट इट्स अ टाइम टेकिंग, राइट? डीप फ्लडिंग कैन रिफ्लेक्ट, कैन वर्क, कैन प्रोजेक्ट ईदर साइड एक्सट्रीमली. तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आप बिल्कुल ही वो के भाग आपके पास आएगा ही, राइट?
सो दिस डिपेंड ऑन योर। एक और ध्यान रखना आपने, ये नहीं कि आपने वर्बली आपने फीस फिक्स कर लिया, सेशन आपने आप अपने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिटेन करेंगे, यू मेंटेन द डायरी। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल इशू। यू गेट द मनी, टेक द सिग्नेचर ऑफ द क्लाइंट, right? You keep a record. You client paid you 1,000 rupees on this date at this time. You just maintain the record and put the client signature there, because that session is recorded officially with you and the money is recorded officially with you. At the later stage, because it is a long process of 3 months, 4 months, 6 months, for example, there may be any lapses, any lacking, any forgetting of any transaction, any interaction with you and your client. So better you make a black and white record for your every situation. अब एक साइकोड्रामा, एक जेएल मोरेनो का कंसेप्ट है साइकोड्रामा। एक सोशोग्राम जेल मोरेनो ने कंसेप्ट दिया है, MORENO, जेल मोरेनो। एक है साइकोड्रामा जेल मोरेनो। बेसिकली जेल मोरेनो, हाउ द concepts of psychodrama evolve or develop in his mind. One day he was traveling in the road of a prostitute area, right? And there were a lot of police and they were beating the prostitute and a lot of rush was there. Then he was standing there observing and asking why this chaos are going on, why this problem is going on in particular this area. The people told this is that particular area and there is a conflict between the prostitute people and the client, the police people, right? So then he started there to make a one group of the prostitute, right, and asking them to discuss mutually on a particular one place. And very gradually, slowly, people going on joining that one, and then they started to share their problems openly on a stage, right? And then there is one director of the stage and one person who is having a problem is sharing their problem there in openly in front of the client there. And this Moreno got the motivation that a lot of people join there in a group and they get rid of the problem through their open presentation with the group, right? While sharing, discussing their mutual problems with the group. So this concept has been become more popular, psychodrama, and wherever any psychotherapy remain failure, right? Lot of psychotherapies are there. Which one will be effective? This depends on you and your client and your selection, your efficiency, or your skill, right? So finally, you go for psychodrama. डबल ए का आपने एग्जांपल सुना होगा, अल्कोहलिक अनोनिमस का। उसमें ऐसे ही करते हैं, सारे अल्कोहलिक्स इकट्ठे होते हैं, जो शराब पीना छोड़ चुके हैं वो भी, और आज जो शराब से दुखी होकर शराब पी रहे हैं वो भी, राइट? दे म्यूचुअली शेयर देयर प्रॉब्लम, राइट? दे म्यूचुअली शेयर देयर प्रॉब्लम. And this is similarly psychodrama is there. On the stage, they play their role there as a director and the client there. There will be one empty chair in psychodrama. उस empty chair पे client अपने आप को सोचता है कि मैं इस पे बैठा हुआ हूँ और I'm representing there. Empty chair is representing there only. So psychodrama technique, this is a technique of experiencing or sharing of direct expression of the emotional disturbances of the client. Right? Emotionally upset hota hai. Alcoholic is emotionally upset because family is abusing him, family is beating him. He is happy, but societal norms is not allowing him to remain alcoholic. So emotionally, socially disturbed hai. So he is to present their emotions, his emotions, and to get ventilation of the emotions. That is called emotional ventilation, ventilations to feel catharsis. Right? So psychodrama particularly, it may not be effective for your psychoneurotic client. It's proved very, very helpful in the perception of self and reality. That means insight. Self improvement, self efficacy, esteem, self के बारे में बहुत ज्यादा काम करता है ये लोग, right? Because self से related ही emotional ventilation होता है, self से related ही catharsis होता है, right? So play therapy can be there, right? Then we can go for our topic related to your meaning and importance of communication. This is called developing communication skills. How to communicate with the client. Communication is more important. If the client is speaking in Punjabi and you is not comfortable in Punjabi,
right? When you speak in Punjabi in the regional or the mother tongue of the client, client feel more close to you. Client, there is a language gap, right? You know English, right? And the client is not comfortable in English, but you're going on in English. That cannot bridge the gap. Blending of boundaries is to be there. You have to blend the boundary of the language communication. You have to develop the communications on the basis of the skill of the client. जो क्लाइंट का लेवल है ना, उस लेवल पे जाके आपने बात करनी है. दिस इज अनदर प्रैक्टिकल इश्यूज व्हेन यू स्टार्ट टू वर्क एज ए प्रोफेशनल, एज ए काउंसलर और थेरेपिस्ट देयर, राइट? आप जो उसकी जो कम्युनिकेशंस क्लाइंट का हिंदी में बोल रहा, आप भी हिंदी में बोलेंगे. ये नहीं कि आपने इंप्रेशन दिखाना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखी हूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ. नो, उसका जो क्लाइंट का लेवल है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, उर्दू वगैरह जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करें उसको, तो क्लाइंट ज्यादा वी फीलिंग होगी, ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंशियल प्रॉपरली कोऑपरेट करेगा आपको. एंड वी फीलिंग है उसके अंदर, बिकॉज यू आर हिज ओन पर्सन. वो आपको अपना आदमी समझने लगते हैं कि मेरे अपने एरिया का आदमी है, इस करके मेरे साथ जस्टिस करेगा, राइट? सो कम्युनिकेशन, बिकॉज दिस इज योर एक्सटर्नल बिहेवियर. External behavior is very projectable, very projectable. Every client first noticed your expression, your external behavior. Internal का तो बाद में पता चलता है जब आपसे वो इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, right? So external behavior must be according to the level of the client, right? So the communication, it is in between you and your client. It should not be extraordinary, it should not be complex. It is a very ordinary communication and simple communication between you and your client. एक और ध्यान रखना, जब आप कम्युनिकेशन में कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं ना, उसका एक्सप्रेशन भी वैसा ही देंगे आप, राइट? अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फेशियल रिफ्लेक्शंस देयर. ओनली इट कैन गिव मोर मीनिंग टू द क्लाइंट्स. जब आप वर्ड्स की, जब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करते हैं, बिकॉज वहां पे एक इमोशनल इंटरेक्शन शुरू हो जाती है क्लाइंट की आपकी सेशंस के अंदर. इमोशनली बॉन्डिंग होती है, बिकॉज यू एज ए थेरेपिस्ट आर टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट इज टू अंडरस्टैंड योर प्रोफेशनल ethics or the professional commitment. So automatically there is a bonding, and every word you are selecting is reflecting there your level, your emotions, your physical, your mental. Every reflections is to be reflected through your presentation selection of the word you are taking. And जब आप selection of the word करते हैं तो क्लाइंट कुछ भूल गया तो you will not be irritated there, और उसको प्रॉपरली रियलाइज कराना आपने, और वो यस कर देता है कि हाँ मैं भूल गया, कुछ भी मैंने गलती करी, जो करिए, उसको इनडायरेक्टली आप उसको रियलाइजेशन कराएंगे थ्रू सिलेक्शन ऑफ द वर्ड, राइट? और हम जब कम्युनिकेशंस करते हैं, कम्युनिकेशन में हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बॉडी कम्युनिकेशन होता है, और एक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है, और थ्रू टच वी कम्युनिकेट, राइट? थ्रू टच वी कैन कम्युनिकेट. कुछ कम्युनिकेशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार एक एज ए काउंसलर भी काम करते हैं. आजकल ना मल्टीटास्किंग काम चल रहा है. आजकल हर आदमी मल्टी लेवल पे काम करने की कोशिश करता है. यू एज ए काउंसलर देयर, बट पैरेलली आपने क्या किया है, हिप्नोटिज्म भी सीख लिया, एक्यूप्रेशर भी सीख लिया मल्टी लेवल पे, और आप अपने आप को मास्टर कहने लग जाते हैं कि मैं हिप्नोटिज्म भी हूँ, हिप्नोटिज्म भी कर चुका हूं मैं, और मैं एक्यूप्रेशर भी करता हूँ. देखिए सारा ऑनलाइन कोर्स है, आपने अपने आप की मास्टरी कर ली, सर्टिफिकेट ले लिया. एंड व्हेन यू आर डूइंग फॉर सम हिप्नोटिज्म, व्हेन यू आर डूइंग फॉर सम acupressure, how to touch the client is more important. From where to touch the client is more important. How much pressure you have to give a particular meaning to the client, right? और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये अपोजिट जेंडर है, टच इज वेरी सेंसिटिव देयर to retain or break your relations as a client and therapist. Hypnotism may be, so communication may be through different mode.
Mode of communication can be verbal, right? We can use the language, right? It can be your action related, it can be your body gesture, facial expression, any types of verbal and the non-verbal communications can be there. वर्बल में तो हमारा कन्वर्सेशन आ जाता है, नॉन वर्बल में many things. Suppose client came, he is greeting you, hello sir, namaste madam, but you're not reacting, आप अपने काम में लगे होते, that is a non-verbal communication giving a very good message to the client that my sir, my madam is still busy, no time to listen me. Then non-verbal communication, right? Then but in between client is raising some problem and you stop, okay, we'll discuss later on, okay, छोड़ो इसको, नोट करो, बाद में बात करेंगे. You have to encourage the client, you have to enhance his participation there. वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि you are not interested, you are not participating there. नॉन वर्बल है सारा वो, right? Your body language, your facial expression and your word of selection of word जो आपके हैं, that conveys a very meaningful things there in your verbal communication and non-verbal communication, right? And you are to accept the client, you are to clarify the client, you are to affirm there, you are to approve there, and you are to take the lead there, right? You as a counselor take the lead there, and automatically you reassure the client there. Reassurance आपकी तरफ से जाएगा, client की तरफ से नहीं जाएगा, right? So automatically when we discuss the verbal communication, many things are in verbal communication, many things are there in verbal communication, many things are there. आप जो phrases और paraphrases use करते हैं, selection of words के according to people are using the phrases and the paraphrases is more important, right? And automatically when you are framing and reframing the sentence there, framing and reframing the sentence is more important there, and the clarification, the reflections you are using there, clarification किसी concepts को कैसे करना है और बहुत important आपका. This is about your verbal communications. फिर non verbal communication is having a multiple level of expression, multiple level. आप जब बैठते हैं पैरों को हिलाते हैं, आप जब बैठते हैं पैन को हिलाते हैं, आप जब बैठते हैं तो जस्ट यू हैविंग क्रॉस लेकर के बैठते हैं, आप जब बैठते हैं तो अपनी हैंड फोल्ड करके बैठते हैं, राइट? आप जब बैठते हैं आप चिन को ऐसे होल्ड करके अपने पाम पे होल्ड करके बैठते हैं. मेनी थिंग्स. आप जब बैठते चेयर को रिवॉल्व करते हैं, इधर उधर करते हैं. मेनी थिंग्स आर देयर टू बी नोटिस्ड बाय द क्लाइंट, राइट? और जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, उसके अंदर मैं बता चुका हूं आपका प्रॉक्सिमिटी, योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर, योर प्रॉक्सिमिटी, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, योर अपीयरेंस, योर मोशन, दैट मीन्स योर मूवमेंट, राइट? Play a significant role there, right? And when it play a significant role, so automatically you people are there to work as a role model for the client there, right? And when a client becomes silent, how you break the silence of the client is a big problem. Silence, that means client is not responsive. When the client is not responsive, that is the resistance is there. How you break the silence of the client? That means client is creating a resistance there and is non-responsive there. How you break that non-responsive? Client is not reacting. So how you break that non-reaction, non-responsive there, right? So this is how you break. You can let me know after this, my presentation. Well, this is my questions to you, note down. How you break the silence of the client, right? We'll discuss and I'll answer. I would like to get the answers from your side. How to break the silence of the client? आपने कुछ बात किया, डिस्कस किया, क्लाइंट साइलेंट हो गया, राइट? कुछ भी रिएक्शन नहीं है, वर्बल नॉन वर्बल कुछ भी नहीं है. हाउ टू ब्रेक दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल इश्यूज इन योर काउंसलिंग फैमिली थेरेपी, राइट? एंड देन आपने कोई एडवाइस देना क्लाइंट को, एडवाइस आप कैसे देंगे, राइट?
एडवाइस को देने के लिए इतने एक्सेसिवली भी क्वेश्चंस पुट अप मत करो उसके ऊपर। वी आर गिविंग एडवाइस, डोंट बम्बार्ड द एक्सेसिव क्वेश्चंस देयर। एक्सेस में भी क्वेश्चंस पूछना, एक्सेस में भी उसे मोटिवेट करना कि इसका भी रिप्लाई करो, इसका भी रिप्लाई करो। यू गो पर्टिकुलरली अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द क्लाइंट कि कितना वो रिस्पॉन्सिव है, राइट। और ओनली देन दो चीजें याद रखनी है आपकी, कम्युनिकेशन जब करेंगे तो क्लाइंट के अंदर आपने हेल्पिंग बिहेवियर डेवलप करना है, न कि नॉन हेल्पिंग बिहेवियर। जब वो साइलेंस आता है, सो दैट मीन्स क्लाइंट इज नॉट हेल्पिंग यू फॉर टू गो फर्दर। So whenever you have a communication, whenever you have therapeutic accord, therapeutic relations or therapeutic agreement, you are to develop a helping behavior of the client and of yourself. क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं डेफिनेटली, एंड आपको ये लगना चाहिए कि क्लाइंट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को आगे करने के लिए मुझे हेल्प कर रहा है, ठीक है। ओनली देन इट कैन गोज वेरी स्मूथ। अगर हेल्पिंग और नॉन हेल्पिंग बिहेवियर चलता रहेगा तो इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू पीपल। एंड हमेशा लेक्चरिंग नहीं करनी है आपने, हमेशा टॉक थेरेपी नहीं करनी है। थोड़ा सा इनफॉर्मल हो, थोड़ा सा नॉन फॉर्मल होना। कहीं पे लगता है मैं आपको, चलो आपसे जवाब बाद में पूछा ना मैंने कि हाउ टू ब्रेक द साइलेंस, हम बाद में पूछेंगे इसका जवाब, मैं भी दे रहा था, सॉरी बाद में देंगे इसका जवाब हम आपको। इसके बाद हमारे पास एक बड़ा बिग कंसेप्ट है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन काउंसलिंग फैमिली थेरेपी में मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। मेडिटेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, इंटरवीनिंग प्रोसेस होता है बिटवीन टू पीपल, टू पार्टी। एक इंटरवेंशन करनी है आपने मेडिटेशन। और मेडिटेशन का बेसिकली इफ वी कैन यूज द साइकोलॉजी वर्ड देयर, आज के जमाने में MICBT बहुत फेमस एक मेडिटेशन की टेक्निक यूज की जाती है। MICBT, माइंडफुलनेस इंटीग्रेटेड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट पीपल हैव इंटीग्रेटेड कॉग्निटिव बिहेवियर बोथ देयर टू मेडिटेट द क्लाइंट। MICBT पहले CIBT थी होगी, राइट, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर इंटीग्रेशन। लेकिन माइंडफुल लेवल पे दोनों को इंटरेक्ट करके इंटीग्रेटिवली दोनों को फिर वो ऑपरेशनल देखते हैं, वर्क लेवल देखते हैं कि हाउ द बोथ MICBT कैन बी functional, can be effective for the client. So meditation is playing an important role, and particularly meditation is an assisted interaction, right? Because it is a direct talk between you and your client. Assisted interaction होगा meditation के लिए आपका। and आप meditation क्यों करते हैं? Because it helps you to resolve the dispute, resolve the issues, resolve the problem there. We go for meditation. This depends according to the client nature. If client don't like the meditation, you cannot ask for meditation, right? If the client prefer to go for that, it's most helpful in the emotional crisis. Meditation, right? So process क्या होगा meditation का? Process, particularly, it can be information gathering time. It can be particular for introduction, and then particular for fixing a problem. You introduce the client and introduce yourself, then you fix up the problem, and then seeking the information, and then you are to, after seeking the information, making the introduction and making the platform rapport formation, you have to find out the problem, where problem lies. उसको आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना है, राइट। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने एक ओपिनियन डेवलप करना है आपके अपने आप के बारे में कि हाउ यू विल गो, एंड क्लाइंट के बारे में हाउ क्लाइंट वांट टू गो फर्दर। यू हैव टू डेवलप वन ओपिनियन देयर, राइट। एंड जब ओपिनियन बना लेंगे आप कि आपने क्या कैसे फंक्शनल शुरू करने आपने, और क्लाइंट कैसे चाहता है, दोनों के अंदर कंसेंसस डेवलप हो गया कि हाँ क्लाइंट इज एग्री एंड यू आर एग्री to go by this way, right? And if both are agreed there, then you go for final alliance there, final agreement there, and final contract to be signed both of you, right? So meditation jab aap karte hain, meditation play a multiple role there, right? As a facilitator, as an educator, as an advisor,
as a reality check or catalyst or record keeper. Multiple role of meditations are there. कौन से रोल की जरूरत है वहां पे, आप क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करेंगे विच रोल यू आर टू प्ले देयर व्हाइल यू आर अप्लाइंग मेडिटेशन. और आज के जमाने में it is very famous statement going on from medication to meditation. दवाई से मेडिटेशन की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं आज. It is very famous. Scenario is changing from medication, that is a medicine, from medication to meditation. Right? आज का एक नया चेंज आ रहा है ये. Right? अगर आप मेडिकेशन किया आपने और आप उसको असेसमेंट करना चाह रहे whether your medication process is effective or not, how you note down the success rate of your medication therapy there. Right? आप क्लाइंट के रिलेशंस को स्टडी करेंगे, हाउ मच रिलेशंस बिटवीन यू एंड द सोसाइटी ऑफ द क्लाइंट इज देयर. रिलेशंस में एनहांसमेंट है, पॉजिटिव चेंज है, देन यू कैन रियलाइज यस if relations are enhancing, strengthening in the client with you and the society both, right? And secondly, thinking level of the client is change or not. If you change the thinking level or the perception of the client, obviously you are getting success in implementation of your medication process. And then finally implementation आपने check करना है what level of implementation client is imbibing, client is learning, and through learning, through modeling, through imbibing, what percentage of that one is implemented by the client there, right? So only then with these three criteria you can assess your use or the effectivity of your medication process, right? Lot of issues dispute भी है medication में, कोई ना कोई आपके और client के बीच में आ जाएगा, right? Management strategies भी आएगी, how to manage strategies. फिर एक सबसे लास्ट में लाइफ स्किल एजुकेशन, आपने साइको एजुकेशन पे काम करना, लाइफ स्किल एजुकेशन, डे टू डे टिप्स आपने देना, डे टू डे लाइफ, हाउ टू हैंडल द डे टू डे इश्यूज, डे टू डे डिस्प्यूट, डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट विद इन द फैमिली, विद इन द सोसाइटी. आपने लाइफ स्किल टिप्स देने अपने क्लाइंट को, लाइफ स्किल टिप्स, और वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर. सो लाइफ स्किल टिप्स देने के लिए यू हैव टू लर्न मेनी थिंग्स रिलेट टू ए पर्टिकुलर कल्चरल ओरिएंटेशन. हर कल्चर के अपने लाइफ टिप्स होते हैं, राइट? कल्चरल बैरियर्स पक्का आते लाइफ स्किल्स के अंदर. कल्चर ओरिएंटेशन स्किल्स हम सीखते हैं. ये एक पंजाबी कल्चर, right? So this is all about my topic for today, and now I am open to the question. Now first I'll ask my questions. Silence आपने कैसे ब्रेक करना है? Namaskaram, sir. Am I audible? नमस्कार. Good evening, sir. हाँ जी, good evening. How you break the silence? Yes, sir. I observe when on a particular topic the client becomes stopped suddenly and not Yeah. responding. I think Yeah. if I change the topic or something informal I start to ask, then they just absentmindedly they started to respond again. Good. Anyone else? Thank you. Anyone else? Good evening, sir. Kritika ji, yes. Sir, we can break the silence of the client by continuous questioning, I guess. Like related to the topic, can be formal or informal, like both ways. Like some informal talk so that it leads to the some subconsciousness so that we can like connect to the topic again and we get the answer of the silence. Okay. Anyone else? I'll reply at the end. Yes. Anyone else? Okay, sir. So
my answer is, I told you in between, you go formal and informal. Formal and informal both means here that sometime if you feel there is a resistance and you are going a very formal way, right? As Rashmi said, Rashmi, that means to divert, to direct, to change the environment of your therapy, you become little informal there. You don't change the topic. टॉपिक चेंज नहीं करना, डाइवर्शन नहीं करना आपने टॉपिक चेंज करके, बट यू बिकम लिटिल इनफॉर्मल दे। और इनफॉर्मल का भी एक बैरियर है वहां पे, मैंने बोला एक लाइन खींचना आपने, फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर लाइन खींचना है, छोटा मोटा आपने उस लाइन के ऊपर नीचे होना है कि यानी कि एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाएंगे आप, राइट? सो यू फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शंस आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। If the client become resistant or silent there, non-responsive, you just change your way of expression in a little informal way, small informal way, not big informal, right? Now you ask questions to me. No question? Sir, I have a question. May I ask Yes. you? Yeah, Thank yeah, you, yeah. sir. Sir, you just now explained that meditation therapy. Now, I like to know what is meditation therapy in application base. How you involve a client in meditation? Because meditation, I don't think it is an instant makeup. It is a huge set of change your mind. Then our mind will get relaxed. So how you make your motivate your client to be meditate? Thank you. Please answer my question. Yeah, Rashmi ji, meditation is an umbrella term. First of all, everybody must be clear about the meditation word. Meditation is a umbrella term, right? It's not so simple to apply meditation. Number one, I told you, you have to study the psychology of the client before proceeding to your session, a formal setting, your therapy. You understand the psychology, you understand the emotions problem, behavioral problem, social problem, personal problem. That means you understand the client thoroughly. When you understand the client thoroughly, you know the merits and demerits of the client. And being known to the merits and demerits of the client, accordingly you pursue. And you cannot impose meditation. Get the consent of the client, yes. And according to the terms of the client, in terms of nature, degree, frequency, and types of the problem of the client, then you ask, give an option, and you can try the option that it can be meaningfully directly on the client. You see the psychology of the client, and only after observing the psychology of the client, you decide position to take the decision for the effective implementation of a psychology. और Hello, कुछ? sir. Sir, हाँ जी, पूछना चाहती हूँ. Sir, do you think meditation can be imposed, or it is the innermost change of a person, or control of their own emotions and mindfulness? It can आपका be क्वेश्चन, changed outside. Yes, sir. आपका क्वेश्चन दोबारा बोलो, कुछ आवाज प्रॉपर नहीं आया. Sir, now may I audible now, sir? Is it? यस, हाँ Hello. दोबारा बोलो. Yes, sir. Yes. My question is, as a therapist, do you think meditation can be imposed on a person who is very uncontrolled or restless, or unable to sit at least properly for a long time silently? So how you impose on it, other than they You, are not I receiving told you, I their told you, inner self? I told you, you cannot impose anything on the client. You cannot impose. I told you, you study the client first. Merit and demerits of the client, your the client skills, client characteristics, client background, client personality, client behavior. You have to study the client first.
right? You cannot impose, right? You cannot impose, but you must have some alternate ways. You take the example of find the doctor. Similarly, you must take the alternate there. Right? Alternative therapy, right? So you cannot impose and we impose. Thank you, Sakesh. Good evening, sir. Kiran here. I have a question. My question is actually two parts. The first Hello. one being, hello, sir, can you hear me? Haan ji, Kiran ji. Yes. Yeah. Sir, the question is two parts. The first part is if, as a therapist, you detect a hint that the client is somehow not extremely or 100% truthful, is lying, and how do you confront that the best possible way without offending the client? And the second part of the question is in relation to the first, or not related, that if a client is showing some form of anger in coming around, if let's say the client has caught on the person is not truthful, and you confront, and of course various clients will have a various reactions, but if particular client shows a little bit of anger, how do you deal with that scenario? Thank you, sir. Your first part, I told you, I think day before yesterday also, there was the same questions or yesterday about the client non-supportive behavior of the client, right? This is particularly non-supportive behavior. I think Mm-hmm. Rashmi has asked me during the last session or whatever she asked me, I think non-supportive, the client is not supportive towards your therapy, for example. This is the Mm-hmm. problem of you at your level. Until Okay. or unless you do not seek the confidence of the client, you cannot proceed. You cannot initiate the agreement, right? You must build up a rapport building, and then through rapport building, you have to generate the insight level, increase the insight level of the client, and then clients start to accept, and then you start their therapeutic session. Until the client is not competent to know the to go inside, right, Uh-huh. and accept yourself as a therapist and accept his own fault or the problem, you cannot proceed further there. Initially you have to seek. I understand, sir. I will interrupt you here for a moment. Sorry. What if during the course of therapy, during the course of session, in let's say in the middle of it, you understand for some particular thing, Yeah, you know there as a are. client, you. Suppose the client started, agreed everything, but in between Uh huh. the therapeutic session, for example, like third, fourth Right. session, the client become non-supportive there. Uh huh. Then it's not definite that you at your part. The client may Okay. have a lot of change in their family setup, lot of Absolutely. happening in their peer group, maybe Mm-hmm. happening in their professional life. Mm-hmm. You have to find out that problem. The problem lies at what level. It can be Okay. religious, personal, financial, professional. You have to find out the reason, Mm-hmm. right? And by finding the reason, you try to help the client. ये नहीं है कि किसी को उसको नौकरी से निकाल दिया है, सबको नौकरी लगवा दी है, सब ठीक है, बट यू आर एक अल्कोहलिक है, उसने मालिक ने शराबी करके उसको नौकरी से निकाल दिया, कोई कहेगा Mm-hmm. सर मैं तो नौकरी नौकरी, मेरे पास पैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो वो बीन बिटवीन प्रॉब्लम आया है। जब उसको आप जब रीजन आपके सामने है, यू हैव टू गिव द अल्टरनेट। Okay. आपने अश्योरेंस तो देना ही नहीं है उसको किसी चीज से, मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, ठीक हो जाओ, ये हो जाओ। यू हैव टू जस्ट गिव अल्टरनेट देयर, बेस्ट Okay. अल्टरनेट आपके ऑप्शंस, बेस्ट ऑप्शन यू हैव टू सजेस्ट देयर। And definitely, when you're giving a multiple options and the alternate there, the client definitely choose the suitable alternate there. Okay. Number one. Number two, because this is a in between therapeutic session, client Yeah. has already paid some money to you, right? Client already Yeah. paid some money to you, and client Mm-hmm. intentionally don't want to go back. There Uh-huh. are certain triggers, there are factors, compelling factors which
helping him to break, be non-stop, non-supportive. You have to control the factors. This is called extraneous factors. Okay. And client himself or herself is not willing, but external factor motivates him, compelling him to like this, to be like this. Okay. Okay. You have to control those factors. You as a therapist there, you as a model there, आपने ये नहीं कि क्लाइंट की प्रॉब्लम पे फोकस करना है, आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी तो कंट्रोल करेंगे ना. मैं शराबी हूँ, मेरे ग्रुप ने मुझे शराब पिलानी शुरू कर दी है, तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे अल्टरनेट देंगे कि शाम को अपने दोस्तों में ना बैठो. Okay. दिस इज Got it. एक्सटर्नल फैक्टर ना. Got यू it. जस्ट नॉट फोकस ओनली ऑन द प्रॉब्लम. बस प्रॉब्लम क्लाइंट ने अपने आप नहीं, मैं अपने शराबी अपने आप नहीं बनाना. देयर आर एक्सटर्नल So a lot of कंट्रीब्यूटरी so a lot of investigative, emotional level पे बहुत investigative work है ये. एवरी काउंसलर वही तो काउंसलर होता है जो मल्टी लेवल पे फंक्शनल रहता है. वो Okay. आप अकेले प्रॉब्लम को फोकस करके चलेंगे, रेस्ट ऑफ द एरिया यू नॉट फोकसिंग और इग्नोरिंग, तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा वहां पे, पक्का. Okay. And the second part of the You know question, sir, problem. if the go Yeah, ahead. I'm coming to the second part, anger ka. Okay. And because problem is not a single factor oriented. Okay. Am I right? Problem is not rooted through a single factor. There are multiple factors related problem. मैं एग्जाम में फेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया. एग्जाम में फेल होना इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट सोसाइटल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, माय पीयर इश्यूज. मेरे पीयर्स आगे निकल के मेरे क्लास में मैं पीछे रह गया. मेरे पेरेंट्स कहते हैं तू क्या पढ़ता है, ये करता है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ एक साल पीछे होगी. मेनी फैक्टर्स आर देयर. एग्जाम में फेल होना इज नॉट ए ओनली सिंगल कॉज ऑफ योर माय डिप्रेशन. Similarly, every problem is a multi-level, multi-factors affected problem, multi-factor generated problem. Whereas your second question is concerned about your anger. Anger management आपको करना पड़ेगा. आपने कोई ऐसे ट्रिगर्स, कोई ऐसी क्लू नहीं देने. आपने क्लाइंट की साइकी को समझना है कि क्लाइंट किस पॉइंट पे सेंसिटिव है, किस पॉइंट पे नॉन सेंसिटिव. और सेंसिटिव पॉइंट को तो आपने इमीडिएटली छेड़ना ही नहीं है. एक सीजनिंग डेवलप, एक क्लाइंट के अंदर एक सीजनिंग डेवलप करनी है. सीजन क्लाइंट बनाना आपने उसको. जैसे सीजनिंग होती ना, एक लक्कड़ बाहर पड़ा है, उसकी बारिश होती, आंधी होती, उसको कोई असर नहीं पड़ता, सीजनिंग हो चुकी है उसकी. एक नया लक्कड़ काट के पेड़ का बाहर गिरेंगे, वो आंधी में, बारिश में और धूप में उसकी ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट पड़ गया, बिकॉज वो उसकी सीजनिंग नहीं हुई है. इसीलिए आदमी की पहले आप क्लाइंट की सीजनिंग करेंगे. यू हैव टू सीजन द क्लाइंट एंड ओनली देन आप जो ट्रिगर्स हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, वो आपने नोट करने कि क्लाइंट कहाँ पे ज्यादा सेंसिटिव है. अगर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और उन्हीं पॉइंट्स को आप छेड़ेंगे तो क्लाइंट एग्रेसिव होगा, एंगर में आएगा, बिकॉज दे आर द सेंसिटिव पॉइंट. और वो बीइंग साइकोलॉजिस्ट, बीइंग काउंसलर, यू हैव टू नोट डाउन. मैं कह तो रहा हूं, पहले जब भी आपने थेरेपी शुरू करनी है, काउंसलिंग शुरू करनी है, थोरो स्टडी करनी पड़ेगी क्लाइंट को. अगर आपने इफेक्टिव रिजल्ट्स देना, you have to go for thorough study of every parameter of the client. ये नहीं है कि चलो क्लाइंट आ गया, मेरे पैसे बनेंगे, इसकी प्रॉब्लम शराब छुटानी. नो, every parameter is to be studied first, monitor first, and then you make your strategy how to go. और डायरी बनाने का यही तो रीजन बता रहा हूं ना मैं. उसके वीक और स्ट्रेंथ आप नोट करेंगे, राइट? So, sir, give me like some heavy pointers on how to conduct the seasoning part. You mentioned seasoning. I like that word. But is there a standard protocol or it varies? Yes, obviously. Is there a step-wise process? मैं आपको एक बात कह रहा हूं ना आपको. अब जैसे कोरोना का एग्जांपल ले लो. अभी कोरोना के बारे में एक नया वर्ड निकल गया है, न्यू नॉर्मलसी, न्यू नॉर्मल लाइफ. एक नया वर्ड निकल के आ रहा, न्यू नॉर्मल लाइफ. लाइफ तो पहले भी था ना हमारा, बीच में कोरोना आ गया, हमारी अब नॉर्मल लाइफ. अब इसके बाद हम न्यू नॉर्मल लाइफ शुरू करेंगे, राइट? तो सीजनिंग जो क्लाइंट की है, क्लाइंट की सीजनिंग इज ए न्यू नॉर्मल लाइफ. उसकी अब नॉर्मल लाइफ थी ना वो. ओके. अब लाइफ होगी ना. Am I right? I am alcoholic. Yes. And being alcoholic, I am having a abnormal life, right? And if I am
coming out of alcohol, that will be my new normal life. You're getting my point? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Listening, sir. Listening. Please proceed. Okay. And if... हाँ सर. थैंक यू डॉक्टर साहब, समय के भी वचनबद्धता को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारे चलो पास चलो चलो चलो, ये कौन थी? रंधावा मैडम कौन थी ये? हाँ, ये मैं थी सर, किरण किरण रंधावा। रंधावा सर। किरण रंधावा जी, अप्रिशिएट किरण प्रीत यहाँ पे किरण रंधावा, किरण प्रीत जी, अप्रिशिएट योर वैलिड हाँ पॉइंट। जी। फिर कभी हम बात करेंगे इस बारे में, प्लीज। Thanks a lot, Thank you, sir, sir. for your wonderful sessions. And I Thank you. need to listen to you more on this हाँ जी, way. I क्या कह रहे want to listen to you more. The way you just taught us with your showering of wisdom. Please, मैडम on जी, this way. मैडम जी, ये सब चीजें हमें ईमेल पे, इग्नू की ईमेल पे भेजा करो, सब चीजें हमें जो आप लिख रहे हो। ठीक है Yes, sir. sir. Sure. You- I will किस shower you. के फीडबैक Thank कैसे you. चल रहा है? यू सेंड ऑल दिस फीडबैक टू इग्नू ईमेल हमें। Yeah, Yes, yeah. sir. Thank Yes, sir. you very Thanks much, a sir. lot, sir. I will shower ओके, you. Sure.